नहीं है तो अनफॉर्चुनेट है, पर दो बड़े नाम वही हैं एक्चुअली। इनफैक्ट मोर देन संजू आई एम slightly heartbroken for Yuji Chahal because वो कुछ ना कुछ होता है, बेचारे का नाम रह जाता है। इस शॉट के साथ एक और शतक रोहित के नाम। आप ही का गेम है, देखने में चार्ज कैसा। IDFC फर्स्ट बैंक इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज बिल्कुल फ्री, सिर्फ जियो सिनेमा पे। Don't just watch India versus Pakistan. Play along and win signed merchandise by Indian captain Rohit Sharma and many other prizes with the Cheeto Dhananatan contest on Jio Cinema. Just follow these instructions. Rotate your phone to portrait mode after every over. Answer simple questions and stand a chance to win prizes with the Cheeto Dhananatan contest only on Jio Cinema. And the striker dribbles into the opposition half. It's a great opportunity to turn the game. He's setting it up, man. The 10th year of the Indian Super League starts 21st September only on Jio Cinema and Sports 80, the new home of Indian football. Yamaha R15 co-presents MotoGP. This broadcast is co-presented by Castrol Power One, powering the fastest riders, and Yamaha Racing R15. 5 वनडे वर्ल्ड कप, 2 चैंपियंस ट्रॉफी, सर्वश्रेष्ठ टीम से होने जा रहा है भारत का इम्तिहान। IDFC फर्स्ट बैंक इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज 22 सितंबर से शुरू हो रही है। हिंदी में देखिए जियो सिनेमा और कलर सिनेप्लेक्स सुपर हिट्स पर। ये वो जगह है जहां दिग्गज तैयार होते हैं। एक बेहतरीन युवा ड्रिबलर, एक बेहतरीन युवा मिडफील्डर। भविष्य में कौन दिग्गज बन सकता है, आप तय करें। दुनिया की बेहतरीन युवा प्रतिभाएं यहाँ ला लीगा खेलती हैं। फिर कुछ और क्यों देखें, सिर्फ जियो सिनेमा स्पोर्ट्स 18 पर। इस शॉट के साथ एक और शतक रोहित के नाम। आप ही का गेम है, देखने में चार्ज कैसा। IDFC फर्स्ट बैंक इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज बिल्कुल फ्री, सिर्फ जियो सिनेमा पे। Let's move on to the more important topic, which is Akash Chopra's World Cup 11. And I specifically want to know your keeper batter choice when you give your 11. See, a lot of people are going to hate me for this, but I'm going to stick my neck out and say, and I've got reasons for that. I've got Shubman Gill and Rohit Sharma as openers. I've got Virat Kohli at 3 and I won't touch him. And please, nobody should touch him. Khelne do 3 pe. At 4, I've got Shreyas Iyer. At 5, I've got KL Rahul. At 6, I've got Hardik Pandya. 7, I've got Jadeja. I want another bowler, like a proper bowler at 8, पर वो होगा नहीं. So वो शार्दुल ठाकुर ही आने वाले हैं. Shardul Thakur, I see him playing a lot of games. And then Kuldeep Yadav, Siraj and Bumrah, that will be the 11. To answer your question, कि KL Rahul क्यों और ईशान किशन क्यों नहीं? For a very simple reason that personally at this point in time, when we are recording this or we are talking about this, and a lot of games haven't happened, where Ishan has batted at 5 and has gone out to bat in the 30th over. तो मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न है और वो कंसर्न ये है कि मैंने KL राहुल को 25वें ओवर, 27वें ओवर, 31वें ओवर में बैटिंग करते दिखा है कि वो जाते हैं, वो स्पिन को डोमिनेट कर पाते हैं और ही हैज गॉट दैट गेम एंड ही स्कोर्ड रन्स देयर एट दैट नंबर, एट दैट पोजीशन, इन दोस सिचुएशंस. पर अभी तक ईशान किशन का द बेस्ट ऑफ ईशान किशन इज बीन एज एन ओपनर, अ डबल सेंचुरी, 350s इन अ रो एंड ऑल ऑफ दैट एज एन ओपनर. एक बार जब 5 पे रन बनाए हैं तो वो 5 नंबर पे लॉट ऑफ पीपल आर इग्नोरिंग द फैक्ट कि 8वें ओवर बैटिंग आगे दिया, 8वें ओवर में बैटिंग आ जाए और पहले आप पेस को खेल जाए. बिकॉज आई वाज एन ओपनर, देयर वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंफर्ट फैक्टर इफ आई स्टार्टेड अगेंस्ट पेस एंड then switch to spin after I got set. Then I can actually maneuver the strike, I can actually muscle the ball as well. चौका छक्का मार सकता था. पर अगर मुझे शुरू में कहते रहे बेटा स्पिन खेला, और ये भी ना पुरानी वाली बॉल है और ये थोड़ी सी स्लो सी पिच है, you find yourself slightly out
comfort zone and slightly inept at times. So that is my only reason. But team might think differently because form sometimes just supersedes everything else. When we spoke to Abhinav and Abhishek on who they would have loved to have in their squad and who's their top four going to be, this is what they had to say. If there was one name that comes to my mind, and I feel most of India would be talking about that, why Yuzinder Chahal? I think Yuzinder Chahal, being a sort of bowler he has been known, how lethal he's been in Indian conditions. Would love to have had him, but unfortunately, because it's only a squad of 15 and we can have only 15 players, I think India's opted with someone who can add value with the bat and ball, and so Akshar Patel makes his place. But I think all in all, a good squad. But if I had to choose one name who I would have loved to have in this team, would be Yuzinder Chahal. I would have loved to have seen an off spinner there, but I think just on form, just on the basis of what the other spinners have done, I feel like there's no place for an off spinner in the squad. And as far as I'm concerned, it would have made greater sense to have an off spinner because we're going to come up with teams which are loaded with left-handers, and then what do you do? We don't even have a part-time off spinner in the rank. So that's my biggest point of concern. But I think it's a tough one. But favorite India, India, England, Australia, and this one's a strange one. But I think I'll go with South Africa. I think most will go with New Zealand, but I'll go with South Africa just because I feel it's a team that is evolving and playing good cricket now. I really hope I get it right. I get it wrong all the time. So here it goes. I'll go India, Australia, England, Pakistan. That's my top four. That's what you were. I really hope I get it right this time. Okay, interesting points from both Abhishek and Abhinav. One going with the off spinner, one going with Yuzi Chahal missing out and all of that. Okay, let's have a look at the World Cup 11. Akash, now I'm sure you can see it, and as can I. Abhishek Nair's 11 and Abhinav Mukund's is on the right for you. What do you make of these two 11s that they have picked? नहीं मतलब सिंपल है इसमें तो क्योंकि अभिनव मुकुंद ने तो मेरी 11 ही पिक की हुई है तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी है पर अभिषेक नायर ने भी देखिए वही एक जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो ईशान और राहुल ही है तो एक ईशान की तरफ चला गया दूसरा राहुल की तरफ चला गया आई मीन इट्स नॉट अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू Okay, Akash, they also gave their, Abhishek and Abhinav, the two Abhis also gave their World Cup semi-finalists. एक ने इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ साथ पाकिस्तान को पिक किया तो एक ने साउथ अफ्रीका को पिक किया. आप किसके साथ जा रहे हैं अपने टॉप पे? देखिए इंडिया पाकिस्तान डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान लॉजिकल यही है कि ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड सो ये चार दे मेक अ लॉट ऑफ सेंस मुझे लग रहा है अभिनव मुकुंद के साथ मैं ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ सो ये एंड अप थिंकिंग ऑलमोस्ट लाइक पर क्या है कि वर्ल्ड कप जैसे टाटा आईपीएल दीज आर द टूर्नामेंट्स दैट दे आल्सो थ्रो अ सरप्राइज और टू सो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम सब इस तरीके की तैयारी करते रहे और एक इनमें से कोई बीच में मार खा जाए तो ऑस्ट्रेलिया भी हो सकती है वो इंग्लैंड भी हो सकती है आई एम कन्विंस्ड इन माय हेड कि इंडिया पाकिस्तान तो नहीं हो सकती वो दोनों टीम जो है वो सेमीफाइनल पक्का पहुंचेगी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में से कोई हो सकता है एक लड़खड़ा जाए रास्ते में वहां शायद न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका आई मीन वन ऑफ द टू टीम्स वो जरा बाजी मार जाए पर प्राइमा फेसी तो यही चार हैं जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड पाकिस्तान फेवरेट टू विन पूछूं या छोड़ दूं? देखिए पूछ लीजिए क्या फर्क पड़ रहा है हम तो भारतीय हैं तो हम सब भारतीय हैं तो हम ये कहने वाले हैं कि भारत इज द फेवरेट टू विन पर ये वाला सवाल हमने रोहित से नहीं पूछना है क्योंकि उसने कहा मैं जवाब नहीं दूंगा चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's have a look at Team India's World Cup schedule as well. इंडिया के मैचेस शुरू होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो चेन्नई में वो मुकाबला खेलेंगे 8 अक्टूबर को. उसके बाद अफगानिस्तान 11 अक्टूबर, फिर पाकिस्तान द बिग क्लैश इन अहमदाबाद on the 14th of October, then India play Bangladesh, then New Zealand on the 22nd of October, then England on the 29th of October before we move to November where India plays Sri Lanka and South Africa in the space of about 3 days before finishing the group stages off with a match against the Netherlands on the 12th of November जिनसे इंसिडेंटली वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच भी खेला जाएगा इंडिया और नेदरलैंड्स के बीच. So Akash, simple question, what are the matches that you're most excited about? पहला मैच क्योंकि पहले से टोन सेट होती है और पहला मैच हल्का मैच भी नहीं है आप ऑस्ट्रेलिया के सामने खेल रहे हैं सो दैट इज वन गेम वेयर द स्टेक्स आर रियली हाई और ऑस्ट्रेलिया उस तरीके की टीम भी है कि हम
देखते हैं कई बार सोचते हैं कि यार शायद उतनी तगड़ी टीम नहीं लग रही है और फिर भी वो एंड दैट रिमाइंड्स मी एक्चुअली 2021 का जो वर्ल्ड कप है T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वाज इन नोबडीज फेवरेट की लिस्ट में but they ended up winning the tournament and they defeated New Zealand in the finals. That was a completely out of syllabus questions. So first game against Australia, then the game against Pakistan, that is always going to be a crucial one. And then India versus England is another game जिसमें मजा आएगा कि सामने से क्योंकि दो फिलोसफीज की लड़ाई होगी एक वो बैसबॉल वाली फिलोसफी है दूसरी हमारी बड़ी ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी है तो फिर देखते हैं कि वहाँ कैसा संग्राम रहता है Simple question again. India versus Pakistan, the mother of all battles, as they call it. How crucial is this 14th October match going to be? Is it almost good for India that it comes in the first few matches, Akash, or ये towards the end नहीं आ रहा है? मैं तो इस बात से खुश नहीं पहला मैच नहीं है क्योंकि पिछले अगर आप ICC इवेंट्स उठा के देखो ना वो इतना ज्यादा उस पर ऑब्सेशन हो गया था कि वो पहला मार्की सबसे बड़ा इवेंट पहले डाल दो और वो इतना ब्लॉकबस्टर बना दो कि सडनली लगे वाओ and the World Cup has started with a bang, which maybe works for broadcasters, etc. And just to create the buzz कि India Pakistan शुरू में हो गया, but it's not a good thing यार कि you walk into a World Cup and you're slightly undercooked. और वो हो सकता है कई बार कि not hit the ground running. It is of course the World Cup in the end. तो ये तीसरा मैच है, makes a lot of sense कि दोनों टीम थोड़े अपने नर्व्स को काम करके आएंगी. मुकाबला अहमदाबाद में, अहमदाबाद मुकाबले में सिर्फ एक बात का खतरा रहता है मुझे आजकल वो है कि अंडर लाइट बॉल हरकत कितनी करेगी हालांकि ये कितने बजे का 1:30 बजे का स्टार्ट होगा आई थिंक अगर तो 1:30 बजे का है तो फिर उतना फर्क शायद ना पड़े पर अंडर लाइट इज व्हेन आई टेंड टू गेट वरीड अ लिटिल एट अहमदाबाद these days. Speaking of Rohit Sharma, he missed the 2011 World Cup. He still calls it one of the biggest regrets of his career that he couldn't make it to that squad जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं इतने विस्तार से इतनी डिटेल में. And India won that on home soil. It was the first nation, India also was the first nation to do so. Can Rohit now fulfill his dream after 12 years as the World Cup returns to India? With a quick reminder that जो उन्होंने पहला विश्व कप खेला था T20 का 2007 में उन्होंने जीता था लेकिन उसके बाद से अब तक 16 साल का इंतजार हो चुका है. And okay fine the fact also is that Anand it could be his last World Cup. तो 50 ओवर का वर्ल्ड कप तो लास्ट ही हो जाएगा मतलब I can't actually, we should never say it, but the fact is, लगता तो नहीं है कि 27 का वर्ल्ड कप में आपको रोहित शर्मा भी खेलते हुए नजर आएंगे. It's highly unlikely. Strange things have happened, पर unlikely लगता है. तो अगर ये आखिरी वर्ल्ड कप है, तो और आपने पहला जब खेला था आप जीते थे, उसके बीच में आपने मिस आउट भी किया जब भारत जीत गया. उसके बाद आप खेले भारत जीता नहीं. एक में आपने 500 बनाए, मतलब nobody has scored more hundreds in a one single World Cup edition. He did it in England as an opener. तो उनके लिए तो बहुत बड़ा ये लम्हा होगा और कप्तान के तौर पे रोहित शर्मा के फेवर में ना बहुत सारी चीजें आनंद जनरली I'm yet to come across a guy who says a bad word about Rohit. So ना एक there is this I don't know, he's a good Samaritan, he's someone who everyone likes and there must be good reasons for it. I've not spent any time with him so I've got no idea. पर उनके लिए कई बार होता है कि you feel कि यार ये मेरा कप्तान है and I love him to bits और ये मेरा बहुत ध्यान रखता है मुझे ना इसके लिए खेलना है और and let's do this. तो could be but एक और चीज रहेगी मालूम and I've been talking to a lot of World Cup winners of late आकाशवाणी के लिए जियो सिनेमा पे आएगी तो हर बंदा ना यही बात कहता है कि ना कैंपेन में at some stage you create a माहौल and that माहौल जो है वो दूसरे तीसरे मैच के इर्द गिर्द ना वो अपने आप बनना शुरू हो जाता है उसके बाद वो you become a juggernaut and then you do not stop. And then all energies are actually pulling you in one direction. That is towards the trophy. Now, I really hope that that feeling actually somehow develops within the camp. First match, second match could be the Pakistan game. That turnaround. Even if we win or we lose, doesn't matter. The fact is, the big picture is the World Cup, winning the trophy. तो वो अगर कहीं से हो जाए और वो ऑटोमेटिकली भी हो सकता है. I mean, MS धोनी में भी क्रिएट भी कर सकते हैं इसलिए वो चेन्नई के साथ कर पाते हैं बहुत बार पर that the whole collective starts breathing, dreaming, believing in that common goal. I mean, that's my wish list for this Indian team, and then rest will take care of itself. It's not the first World Cup, 50-over World Cup that he's going to play. We saw what he did in the previous edition of this ODI World Cup. Just 400-500, not too much that we're talking about. Yet, when Ajit Agarkar announced his name, Akash, this is what happened.
Rohit Sharma captain, Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas Iyer. वही अब कह रहे थे ना कि कुछ चीजें जैसे रोहित शर्मा ही कहते हैं in his inimitable style. I mean, that's just Rohit for you. Just so cool, calm, composed, nothing really phases him, but he always finds some sort of humor in situations like that. I mean, he's got the joint most centuries in ODI World Cups, level with the great Sachin Tendulkar, and has a chance to go ahead of him. I mean, that will be some feat, given what Sachin has done in so many World Cups that we've witnessed right from growing up as children to now. Okay, guys, it's been a real pleasure having you with us on this Home of the Blues World Cup special with all your insights, all your inputs, थोड़ी बहुत नटखट selections वगैरह सब कुछ बहुत मजा आया. आपकी 11 में देखना चाहूंगा जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वो मुकाबला आएगा. लेकिन इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात की तो we're just getting started, right? Akash will be there with us as well to start this special journey on Jio Cinema Sports 18. Big preparation ahead. कहते हैं ना unit test before the big board exam. तो पहला ODI मोहाली में 22 सितंबर को 24 सितंबर को जो है दूसरा ओडीआई आएगा इंदौर में और फिर तीसरा ओडीआई राजकोट में 27 सितंबर को. एंड यू कैन वॉच दिस ऑल ऑन होम ऑफ द ब्लूज, दैट्स जियो सिनेमा एंड स्पोर्ट्स 18. पर अंटिल देन मुझे और आकाश को दीजिए इजाजत. इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड का अनाउंसमेंट लाइव कवर करने में बहुत मजा आया और देखने में मजा आया कि कितनी चीजें जो हमारे जहन में थी उसको कैसे क्लैरिफाई करा अजीत अगरकर और रोहित शर्मा ने. ऑस्ट्रेलिया सीरीज तक के लिए लेकिन बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सारी अपडेट्स होम ऑफ द ब्लूज. इस शॉट के साथ एक और शतक रोहित के नाम. आप ही का गेम है. देखने में चार्ज कैसा? IDFC First Bank India versus Australia ODI series बिल्कुल फ्री सिर्फ जियो सिनेमा पे. Don't just watch India versus Pakistan. Play along and win signed merchandise by Indian captain Rohit Sharma and many other prizes with the Cheeto Dhandhanatan contest on Jio Cinema. Just follow these instructions. Rotate your phone to portrait mode after every over. Answer simple questions and stand a chance to win prizes with the Cheeto Dhandhanatan contest only on Jio Cinema. And the striker dribbles into the opposition half. It's a great opportunity to turn the game. He's setting it up, and it's a goal! The 10th year of the Indian Super League starts 21st September only on Jio Cinema and Sports 18, the new home of Indian football. उत्तर प्रदेश T20 लीग 30 अगस्त से जियो सिनेमा पर. अब मचेगा बवाल. This broadcast is co-presented by Gorge Group, building excellence. In the Indian racing revolution, a new chapter is about to be written. Experience the euphoria, because for the first time ever, MotoGP embraces the heart and soul of India. MotoGP Bharat, 24th September, live on Jio Cinema and Sports 18K. This broadcast is co-presented by Yamaha Racing R15 and Castrol Power One, powering the fastest riders. तैयार हो जाइए राजस्थान प्रीमियर लीग के फाइनल के लिए. जयपुर इंडियंस के सामने होंगे जोधपुर सनराइजर्स. इस चमचमाती ट्रॉफी के लिए होगी जयपुर में जंग. वनडे वर्ल्ड कप, 2 चैंपियंस ट्रॉफी, सर्वश्रेष्ठ टीम से होने जा रहा है भारत का इम्तिहान. IDFC फर्स्ट बैंक इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज 22 सितंबर से शुरू हो रही है. हिंदी में देखिए जियो सिनेमा और कलर सिनेप्लेक्स सुपर हिट्स पर. नस में ये जुनून के अंगारे देखो.
Match number 3 of the Unacademy Road Safety World Series. The legends are out in the middle with me. I've got Sachin Tendulkar alongside me. Tilakaratne Dilshan is here as well. Kundapa Vishwanath is our match referee, and we've got our Unacademy toss representative as well. And Sach, you've got the coin, please. Stage. Sachin, you won the toss. What are you going to do, mate? We're going to bowl first on this. Looks quite green. Bit of grass. Do you expect a little bit of movement? This wicket has always been like this. It's got a bit of bounce, a bit of pace. Also, I think the view factor is going to come into play later, so I feel it's better to chase. There you go. It's Sachin Tendulkar and the Indian legends who have won the toss. They're going to bowl first. बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है और काफी दर्शकों की उपस्थिति लोग पहले ही मैदान संभाल चुके हैं मैच शुरू होने जा रहा है फायर्स नजर जाते हुए बड़ा एक मेले जैसा माहौल है बिल्कुल आईपीएल की बात तो हम करते हैं पर ये T20 और शाम को जैसी लाइटें ऑन होती हैं और एक एंटीसिपेशन एक अनुभूति सी होती है कि अब मजा आएगा क्या बात है आपने अनुभूति शब्द का इस्तेमाल किया मुझे अच्छा लगा तो और ये सचिन तेंदुलकर जैसे मैदान संभाला पीछे शहीद खान आ रहे हैं और उनके पीछे भारतीय टीम और दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया देखिए कितना भरा हुआ है ये स्टेडियम और भारतीय तिरंगे झंडे भी लहराते देखे जा सकते हैं और श्रीलंका की टीम भी बहुत ही मजबूत है पहले मैच में ही उन्होंने दिखा दिया था कि किस तरह से वो खेल सकते हैं जब पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने पराजित कर दिया खुशी का माहौल अपेक्षाओं का माहौल रोमांच का वातावरण उत्साह हर चेहरे पर दिख रहा है अनअकैडमी काउंटडाउन शुरू हो रहा है और साथ ही लेट्स डू इट लेट्स ब्रेक इट ये मैच शुरू हो रहा है संभावनाओं से भरा हुआ मैच दिलचस्प माजरे का इंतजार पहली गेंद जाहिर खान की ये इन स्विंग करती धीरे से पुश किया लेकिन एक रन के लिए दौड़ पड़े फुर्ती के साथ ओवर थ्रो भी हुआ दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं जो कि जोखिम भरा हो सकता था लेकिन सही वक्त पर वापस लौट कर तो पहली गेंद पर एक रन बन गया और 4 रन मिल जाएंगे इस बार थोड़ी इंतजार में थे कि शॉर्ट ऑफ वुडलैंड गेंदबाजी करेंगे जहीर खान और वैसा ही हुआ ये जो समझदारी है ये खेल में बहुत काम आती है ये फिर थोड़ी सी शॉट और फिर बैकफुट पर जाकर पुल कर दिया स्क्वायर लेग पर वहां पर मिसफील्ड हुआ और 4 रन स्क्वायर लेग बाउंड्री पर इरफान खड़े थे वहां पर लेकिन उनके हाथों के बीच में से निकल के दुखी हुए ओवर की समाप्ति 10 रन बिना किसी नुकसान स्लिप नहीं लिया है और थर्ड मैन अंदर था तो भाग्यशाली रहे दिलशान कि चौका मिल गया ये उठाकर मारा इस बार लेंथ पे आ गई थी और सीधा मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन बहुत ही बढ़िया तो कनेक्शन बहुत ही शानदार विद द टाइड उसे घुमा दिया और कनेक्शन बहुत ही शानदार 4 रन ओह क्या शॉट है और इतना तेज कि 5 मीटर साथ में था डीप स्क्वायर लेग के फिर भी रोक नहीं पाए तो 2 चौके लगा के फिर से इस ओवर को भुना दिया दानिवेंद्र ने 27 बिना किसी नुकसान के 4 ओवर के बाद और आते ही उनका स्वागत किया मिड ऑन के ऊपर से उठाकर 4 रन के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री थोड़ा सा वक्त बिताना जरूरी और फिर इस तरह के शॉट्स लगाए जा सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा वक्त अगर आप बिता दें पिच की पेस और बाउंस का आपको अंदाजा हो जाता है और फिर शॉट्स लगाने आसान हो जाते हैं। सो दोनों टीमों को अगर आप देखें तो स्ट्रैटेजी के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। शॉर्ट बॉल पुल कर दिया कोई मौका नहीं रहेगा आउटफील्ड बाउंड्री एक और बाउंड्री और अब दिलशान प्रेशर बना रहे हैं बॉलर के ऊपर क्योंकि पिछली बॉल पर जो शॉट लगाया था ऑन द राइज जिस तरह से अतुल ने बताई थी आसान नहीं थी वो शॉट उसके बाद प्रेशर आया और शॉर्ट बॉल करने की कोशिश की और खूबसूरती के साथ पुल करके एक और बाउंड्री प्राप्त शॉर्ट बॉल हवा में और कोई परेशानी नहीं वहां पर हम ये बात पहले भी कह चुके हैं कि बहुत बढ़िया फील्डर है फिटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं और इरादे स्पष्ट कर दिए पिछले ओवर में दिलशान लेके तेजी से रन बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन मुनाफ पटेल अतुल मुझे बहुत पसंद आते हैं बोले जब खेलते भी थे मैं बहुत निराश हुआ था जब इनका करियर इतना शॉर्ट रह गया था अपनी फिटनेस के ऊपर उन्होंने जितना काम करना चाहिए था नहीं किया क्योंकि इतना नपा तुला बना इतनी नपी तुली
बॉलिंग किया करते थे विकेट टू विकेट, और वही यहाँ पर किया। इसकी वजह से पहला झटका लगा श्रीलंका को। आसान कैच नहीं था ये, और इसलिए इरफान कह रहे हैं कि अगर मैं आता तो शायद मुश्किल हो जाती। अच्छा हुआ कि तुम गए। तो दिलशान का बड़ा विकेट मिल गया भारतीय टीम को 46 में। 259 वनडे मैचेस खेले हैं ये, क्या लाजवाब करियर रहा है। इसमें कोई शक नहीं था, जैसे ये शॉट खेली बिल्कुल विकेट के सामने थे। बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा, कितना बढ़िया स्विंग कराया था, बहुत अच्छी लेंथ। श्रीलंका की टीम को कितनी बढ़िया स्लीप पोजीशन थी है, और कोई शक नहीं था, किसी के मन में भी कोई शक नहीं था। बॉलर, विकेट कीपर, अंपायर, और ये मैं कहूंगा बहुत बड़ा झटका। कालू वितरना 21 रन बनाकर आउट हुए। 25 बॉलों का उन्होंने सामना किया, और उनकी जगह पर दिलान तुषारा खुशकिस्मत रहे। फिर से जिस तरह से अतुल बता रहे थे, उड़ाना चाहते थे, शॉट मारना चाहते थे, बेहतरीन गेंद थी, उसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन बाहरी किनारा लग के बाउंड्री जरूर मिली है, क्योंकि इससे पहले 6 से नीचे की औसत से रन बना ली थी श्रीलंका की टीम, और उनको भेजा ही इसलिए कि तेजी से रन बना सके और उस रन रेट को ऊपर ले जा सके। कुछ पता नहीं था क्या कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट मिला उससे संतुष्ट होंगे। बहुत बढ़िया बॉल, क्या कैच है, बेहतरीन कैच, कमाल की कैच पकड़ी है समीर दीगे ने। रिटायर्ड खिलाड़ी से, रिटायर्ड विकेट कीपर से आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतनी फुर्ती दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त भी मिला था, क्योंकि बॉल बैट पर लगने के बाद थोड़ी धीमी गति से गई थी।